The EMF of the cell in the following circuit is 9 volt. The reading on the high resistance voltmeter is 7.5 volt. What is the current? हम्म आसान से। हाँ। लेकिन उसने कहा कि भाई जो आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल है वो 9 वोल्ट है, और जो बैटरी है वो 7.5 वोल्ट रीड कर रही है। तो So the voltmeter is connected in parallel to the resistor. ओके, लेकिन तो बैटरी से क्यों नहीं? लेकिन बैटरी से क्यों नहीं? ओए, क्या? मतलब वोल्ट मीटर बैटरी से क्यों नहीं कनेक्टेड पैरेलल में? आप क्यों कह रहे हो कि रेजिस्टर से कनेक्टेड है? क्योंकि बैटरी से वो सीरीज में कनेक्टेड अबे कैसे? है। ब्रो बैटरी से भी तो पैरेलल में है। क्यों? हाँ, सीरीज का सर मतलब ये होता है। एक ही बस पाथ तो जा रहा है, तो हाउ इज इट पैरेलल? इट्स नॉट पैरेलल। मुझे पैरेलल सीरीज में ऐसा होता, समझ रहे हो? तो इजंट इट लाइक दैट? नो, ऑब्वियसली ये आपके पास पैरल बेसिकली बेसिकली ये बैटरी के साथ ये आपके पास है ना, ये जो बैटरी आपने लगाई हुई है, ये बैटरी आपने लगी हुई है, और यहाँ पे आपने जो है ना ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इस तरह से, राइट? सो इट इज बेसिकली This पैरेलल। the voltmeter is in parallel, but the resistor is in series with the battery now. यस ऑब्वियसली। So that's what I was saying. मैं वही कह रही थी। अच्छा ऐसा कह रही हो? जी। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। ओके ओके फाइन, तो क्या करें फिर? अ, तो वो लग इस्तेमाल कर लें, V इक्वल्स आई आर। सही है, वोल्टेज में कितना लगे? 9 या 7.5? 9। 9 है, सोच लो। 9 रखनी चाहिए ना? अगर 9 रखोगी तो फिर ये 7.5 क्या चीज़ है? वोल्ट मीटर की की रीडिंग। रीडिंग। ओके, बट वो फिर ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा 9 और 7.5? एनी आइडिया? क्योंकि इफ यू आर कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर एंड देयर हम्म। ओनली बैटरी देयर, राइट? सो वोल्ट मीटर पे वही रीडिंग आनी चाहिए जो कि बैटरी पे हो रही है, राइट? हम्म। या जो कि बैटरी की है। बट अगर बैटरी वाली रीडिंग वोल्ट मीटर में नहीं आ रही तो इसका मतलब है देयर शुड बी सम लॉसेस इनसाइड द बैटरी जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे होते थे, रिमेंबर? हम्म। तो मे बी शायद यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो जो कि 2.5 वोल्ट ड्रॉप करवा रही हो, राइट? हम्म। सही हो गया। 2 नहीं 1.5 बनेगा। सो 1.5 वोल्ट ड्रॉप करवा रही हूँ, राइट? सो रिमेनिंग जो आपके पास 7.5 है वो यहाँ पे आ रहा होगा, इज दैट क्लियर? या। सही हो गया। सो ये 7.5 सही। सो बेसिकली वोल्ट मीटर इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द रेजिस्टर, वो बैटरी से नहीं कनेक्टेड, वो दिखाया हुआ ऐसे, राइट? बट वो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, सही। सो 7.5 डिवाइडेड बाय कितना है? 15 ओम्स। कर लो, कैलकुलेटर है लेके बैठी हूँ कैलकुलेटर। नहीं। अरे यार, सो वंस आर फिर टूज जीरो आर जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव अरे हैवी यार। भाई तूने कैलकुलेटर से किया या मेंटल मैथ्स? ये मेंटल। अरे भैया शफाटर। ओके, आ जाओ फिर ये भी तुम करा दो भाई, जरा रीड कर लोगे? The diagram shows an arrangement of four resistors. What is the resistance between X and Y? हम्म, सिंपल सा है, सिंपल सा है। सर ऊपर के हम्म, 16 होगा, ऊपर और नीचे भी 16, तो वो 1/16 प्लस वन ओवर 1/16, सिक्सटीन 2/16, 1/8, 8 है ना? जी। क्या बात भाई, क्या बात। ओके, आ जाओ भाई। ये करवाएगा, ये जैनब करवाएगी। जैनब प्लीज रीड कर लोगी जैनब? The diagram shows a circuit in which the battery has negligible internal resistance. What is the value of the current? हम्म, अच्छा लेकिन ये करंट इसने ये वाला बोला हुआ है, दैट इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू दिस 6 ओम रेजिस्टर, ओके? कोई आइडिया आपके जहन में? Sir V equals to I are use करेंगे. चलो कर लेते हैं वी इक्वल्स टू आई आर, लेकिन करें क्या फिर? एक और मसला आ रहा है, वो मसला इसका है। चलो खैर बताओ, पहले बताओ वी इक्वल्स टू आई आर में क्या करें, क्या क्या रखें? Um,
सर सारों में सेम होगा ना करंट? है क्यों? क्योंकि सीरीज है, नहीं। क्योंकि पैरेलल है। नहीं, नहीं। खिचड़ी बन गई। अच्छा चलो करते 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 हैं, मिलके करते हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं इसको रिजॉल्व करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना रहा हूँ, इंसान बना रहा हूँ इसको, सही है। सो ये हमारे पास रिजॉल्व है, पैरेलल है, 1/6 प्लस 1/3, राइट। सो ये हो जाएगा 2/6, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ, सही है। सो 2/6, 3/6, 6/3, 2, राइट। इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 2, है भी समझ में आई? इसकी टोटल रेजिस्टेंस 2 आ रही है, क्या ये बात समझ में आई? जी। परफेक्ट। तो ये रेजिस्टर अब ये सर्किट अब आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे एक 2 आ गया, और यहाँ पे एक पहले से 2 लगा हुआ है, ओके। जैनब क्या ये आपको ऐसे दिख रहा है? यस। परफेक्ट दिख रहा है, ओके। तो अगर आपके पास जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, राइट, और आपके पास इक्वल रेजिस्टर्स है, ये इक्वल रेजिस्टेंस है रेजिस्टर की, तो एग्जैक्टली हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही। यानी यहाँ पे भी 6 वोल्ट आएगा और वहाँ पे भी 6 वोल्ट आएगा, क्या ये बात भी समझ में आती है? यस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब कि 6 वोल्ट तो यहाँ पे जा रहा है, राइट। 6 वोल्ट आ रहा है इधर, और 6 वोल्ट आ रहा है इधर, राइट। तो 6 ओम के अक्रॉस आ रहा है 6 वोल्ट। तुम्हें पता है कि भाई सीरीज पैरेलल सर्किट है, ये पूरी जो है ना, ये पूरा पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो ऊपर भी 6 वोल्ट होगा, नीचे भी 6 वोल्ट होगा, राइट। सो अब हमें वोल्टेज पता चल गया। सो अगर हम V = IR लगाएं, V = IR, सो वोल्टेज इज 6, राइट, एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 6, सो करंट आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई जैनब? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। ओके जी, आ जाओ भाई। अरे बाप रे, हसाम, हसाम सर जिंदा ये हो? ऊपर वाला समझो। ओके सर ओके ओके। ऊपर सिक्स वाला और समझा दो कि मैं अरे लैग हो अरे गया था। अरे 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 अरे। और कौन है? कंसर, तुम क्या कह रही हो? 6 और 6 कैसे आया? अरे हैवी 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 हैवी। ओके। अच्छा, और हसाम तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था यही सवाल, ये समझा दे एक दफा। अच्छा, चलो दोबारा से समझते हैं। जैनब तुम्हें भी नहीं समझ में आया इसका मतलब है ना? जैनब नहीं समझ में सर आया ना? आ गया है। पक्का? पक्का। देख लो बेटा, समझा सकती हो क्या? यस। ओए होए, प्लीज प्लीज ट्राई। तो पहली जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके उनकी टोटल रेजिस्टेंस निकाली है। और फिर हम्म। करंट ये अच्छा, जो ऊपर और नीचे अब एक वाला मिनट है एक मिनट एक मिनट एक इसमें। मिनट, अब एक हाँ। मिनट, टू टाइम्स। अच्छा, जब हमने पैरेलल रेजिस्टेंस निकाली, तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, सही है। ये तो 2 ऐसे ही था, हम्म। हमने सिर्फ इनको रिजॉल्व किया, ऐसे ही ना, ऐसे ही कह रही हूँ? यस। परफेक्ट। उसके बाद क्या कह रही थी? उसमें ईच रेजिस्टेंस में रजिस्टर में इक्वल आएगा करंट, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है। ओए, इक्वल तो वोल्टेज सिक्स आएगा। और सिक्स सेम थिंग। 6 और 6। सही हो गया, वेरी गुड। सो यहाँ पे भी 6 वोल्ट्स आएगा, और यहाँ पे भी जो है वो 6 वोल्ट हम्म। ड्रॉप होगा, ओके फाइन। फिर और फिर वो करंट डिवाइड हो रहा है, है। नहीं अच्छा। वोल्टेज डिवाइड वो। अच्छा नहीं नहीं, रुको रुको रुको। अब यहाँ तक आप पहुँच गए हो। यहाँ तक आपने पहुँचने के बाद जो है ना, अब इस सर्किट को यहाँ पे छोड़ के वापसी इस सर्किट पे स्विच हो जाओ, राइट। जब इस सर्किट पे स्विच हो जाओगे, तो अब देखो, यहाँ पे तो हमने वर्कआउट किया कि यहाँ पे 6 वोल्ट है, राइट, यहाँ पे तो कम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी 6 वोल्ट हमने वर्कआउट किया अभी, सही है। और यहाँ पे 6 वोल्ट का मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे 6 वोल्ट आ रहा है, राइट। यानी 6 ओम पे भी 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, और 3 ओम पे भी 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, राइट। बच्चों क्या ये बात क्लियर है? कंसा, हसाम, इब्राहिम, जैनब, तुम्हें भी है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। हाँ जी बच्चा, हाँ जी। ओके ओके। ओके। अच्छा जी, ये हो गया सेम। अच्छा, अब तुम्हारे पास जो है, तुम इसको कर लो, V = IR लगा लो, राइट। IR, वोल्टेज तुम्हारे पास हमने 6 निकाल लिया, और रेजिस्टेंस हमने 6 निकाल ली, राइट। और रेजिस्टेंस हमारे, सॉरी, करंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास आ गया जस्ट 1 एम्पियर, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर करंट हम इधर वो निकाल रहे हैं जहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर है हाँ ना, जी 3 हाँ वाला जी नहीं। हाँ जी, टोटल नहीं निकाल रहे, राइट। यानी ये 1 एम्पियर का करंट यहाँ से गुजर रहा है, राइट। अगर यहाँ से करंट निकालोगे, तो यहाँ पे जो है ना वो 2 एम्पियर का करंट होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस में देख रहे हो कि एग्जैक्टली हाफ है, तो करंट एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, राइट। और अगर तुम इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस निकालोगे, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन पे दोनों करंट ज्वाइन हो जाएंगे, सो 3 एम्पियर का करंट जो है ना वो इस वाले से गुजरेगा, राइट। समझ लो ना भाई? जी सर। अच्छा जनाब,
अब तो ये वाली कहानी तो हो गई। आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। इस पे आ जाओ। कौन करेगा भाई ये? ये आसाम से करवाते हैं। आसाम से रीड कर लेगा भाई प्लीज। The diagram shows the current I1, I2, I3, I4, and I5 in different branches of a circuit. Which one of the following is correct? हम्म। क्या करोगे? देखो, आपने यहाँ पे किरचॉफ को कौन सा लॉ लगाना है? करंट लॉ लगाना है, फर्स्ट वाला। ओके। किरचॉफ का फर्स्ट वाला लॉ क्या कहता है? कि भाई अगर आपके पास ये जंक्शन है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, सही है, एक जंक्शन ये है, और एक जंक्शन ये है, सही है। सो अगर आप पहले वाले जंक्शन पे देखो, पहले वाले जंक्शन पे जो करंट एंटर हो रहा होगा वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से कोई ना कोई करंट आ रहा होगा, लेट्स से आई कह देते हैं, सही। सो वो आई, ऑल्दो वो आई मेंशन नहीं है तो इसलिए वो ऑप्शन बनेगा नहीं। वो आई जो है वहाँ पर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आई 1 के अंदर जा रहा है और आई 4 के अंदर जा रहा है, राइट। किरचॉफ का लॉ क्या कहता है कि करंट एंटरिंग अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग इट। ओके। सो आई 1 और आई 4 जो है वो करंट लीव कर रहा है, और आई 1 जो है वो एंटर हो रहा है, राइट। एक तो ये हो गया। अब ये वाले जंक्शन की, लेट्स से दिस इज जंक्शन, जंक्शन 1 हो गया, जंक्शन 2 की बना लो। जंक्शन 2 की क्या इक्वेशन बनेगी? करंट एंटरिंग अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग इट। आई 1 इज एंटरिंग, जो भी जंक्शन की तरफ जा रहा है दैट इज एंटरिंग, जो भी जंक्शन से अवे जा रहा है दैट इज लीविंग। ओके। सो आई 2 प्लस आई 3 हो गया, सही हो गया। सिमिलरली अच्छा ये वाले जंक्शन 3 के लिए बना लो, जंक्शन 3 के लिए बना लो। जंक्शन 3 पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है? अच्छा दिस इज जंक्शन 2, दिस इज जंक्शन 3। जंक्शन 3 पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है? आई 4 is entering the junction plus I3 is also entering, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये इधर को आ रहा है और ये भी इधर को जा रहा है, राइट। एंड दिस शुड बी इक्वल टू I 5। ओके। एंड तीसरी चीज तीसरी चीज आपके पास है। सो जंक्शन 4 पे अगर तुम देखो, सो आई 2 इज बेसिकली एंटरिंग द जंक्शन और आई 5 भी एंटर हो रहा है। ओके। सो इधर अगर तुम्हें दिख पा रहा है, सो जंक्शन 4 पे अगर तुम देखो, सो आई 2 प्लस आई 5 इज एंटरिंग, राइट। आसान समझ रहा है भाई? जी जी सर। सही हो गया। अच्छा, और वो यहाँ से कोई ना कोई करंट निकलेगा, वो आई ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर्किट का करंट तो चेंज नहीं होता, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से, राइट। सो हम बेसिकली ऐसा भी कह सकते हैं कि आई 1 प्लस आई 4 शुड बी इक्वल टू आई 2 प्लस आई 5। ओके, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ओके। सो ये हमारे पास जो है ना एक एक सर्किट की इक्वेशन। अब इसमें से देख लो कौन सी वो करेक्ट हो रही है। अच्छा जी, I1 इज इक्वल्स टू I2 I3, सही है, दिस इज करेक्ट। I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस आई 3। आई टू इज नॉट इक्वल टू आई 1 प्लस आई 3। ओके फाइन, गलत हो जाएगा। यानी ये इसी चीज़ को फर्स्ट वाली को इन्होंने रीअरेंज किया हुआ है गलत तरीके से। आई 3 आई 4 आई 5 का ये रिलेशन बन रहा है। ओके फाइन, क्लियर हो गया। चलो, सबको समझ में आ गया? आगे चले, चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये वाला कर लेते हैं भाई। कौन सा जरा रीड कर लोगी प्लीज़? The diagram shows two circuits. In these circuits, only the internal resistance differ. Which line in the table is correct? हम्म। इंटरनल रेजिस्टेंस उसने ज़्यादा की हुई है एक एक सर्किट में, दूसरे सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस ने कम की हुई है। ओके। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम एंड अक्रॉस 3 ओम, सही है। अच्छा जनाब, यहाँ पे इंटरनल जो लॉस लॉस होगा यहाँ पे वो कम लॉस होगा, और यहाँ पे इस केस के अंदर ज़्यादा लॉस होगा, राइट। तो जो वाई पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, यहाँ पे इस केस के अंदर पीडी आपको ज़्यादा मिल रहा होगा यहाँ पे, राइट। पीडी ग्रेटर मिल रहा होगा।
सही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप जस्ट ये पोटेंशियल डिवाइडर है राइट, 0.5 के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे, राइट। लेकिन इस केस के अंदर जब 2 ओम की रेजिस्टेंस है तो जो 2 ओम के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा, सही है, और यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट। सो अगर आप जब चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमें पता है कि भाई टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 3.5 की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो 1.5 है, राइट। सो अगर हम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकालें, सो हमारे पास आ जाएगा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर हम वोल्टेज निकालें तो हमारे पास कितना आएगा ब्रो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1.5 और डिवाइडेड बाय 3.5, 1.2, कितना, 1.28. 1.28, राइट, इससे ये आ रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप निकालो, सो यहाँ पे भी यही काम करना है, बट यहाँ पे 5 ओम की टोटल रेजिस्टेंस है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1.5 का वोल्टेज है, राइट। और जब आपके पास जो है ना 3 ओम की रेजिस्टेंस होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 5, कितना बना, 0.9. 0.9, ओके। सो यू कैन सी दैट कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, राइट। अच्छा जनाब, अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर ग्रेटर इन एक्स देन इन वाई, ग्रेटर इन एक्स देन इन वाई, और पावर डेसिपेशन इन द रेजिस्टर, ओके। सो अच्छा, पावर डेसिपेशन भी क्या कमेंट होगा भाई, यस कौन सा कुछ बोले यार, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, पावर का फार्मूला होता है, हाँ, पावर भी बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। है ऐसा। अच्छा ये देखो, आपने आपने बेसिकली क्या करना है कि आपके पास करंट तो ओके, रेजिस्टेंस दोनों की सेम, ओके फाइन, 3 मतलब एक्स और वाई दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, राइट। तो हम रेजिस्टेंस के पैरामीटर को अगर छोड़ दें, राइट, हम आई स्क्वायर, हम जस्ट आई और वी का फार्मूला यूज कर रहे हैं, ओके। सो पहले वाले सर्किट के अंदर चूंकि रेजिस्टेंस है 3.5 की, तो ऑब्वियस सी बात है करंट ज़्यादा होगा, दूसरे वाले सर्किट के अंदर है करंट, दूसरे वाले सर्किट के अंदर जो है ना वो रेजिस्टेंस है 5 ओम की, तो करंट कम होगा, राइट। टोटल करंट कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, राइट। एंड ये अगर आप बोलो तो हम निकाल लेते हैं, सही है। हमें ये पता है कि भाई हमारे पास जो पहले वाले सर्किट का जो करंट आ रहा होगा, वो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास, टोटल वोल्टेज है 1.5, ओके, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 3.5, ओके। और हम पहले ही निकाल चुके हैं कि भाई इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 1.28 का, राइट। ये आ गई पावर अक्रॉस एक्स, ओके। और पावर अक्रॉस वाई अगर निकालना चाहो, पावर अक्रॉस वाई, सो आपके पास क्या बन जाएगा, आप पहले ही निकाल चुके हो कि अच्छा इसका करंट आपके पास आ जाएगा, टोटल वोल्टेज है 1.5 का, राइट। और जो वो है यानी रेजिस्टेंस है दैट इज 5, और इसके अक्रॉस जो हम वोल्टेज निकाल चुके हैं वो 0.9 का निकाल चुके हैं, राइट। अब दोनों देख लो किस तरह से आ रहा है, सर इसमें हम वी स्क्वायर ओवर आर भी कर सकते हैं ना? वी स्क्वायर ओवर आर, यार एक्चुअली ना मसला ये है कि दोनों सर्किट के अंदर करंट भी डिफरेंट है और वोल्टेज भी डिफरेंट है, राइट। दोनों पैरामीटर डिफरेंट है, समझ पा रहे हो आप। तो अगर आप कोई भी ऐसा पैरामीटर स्किप कर रहे हो कि जो चेंज हो रहा है, राइट, तो फिर उससे प्रॉब्लम बन जाएगा, राइट। अब अगर सर आप वी वोल्टेज स्क्वायर, सेम तो है। लेकिन वोल्टेज तो रेजिस्टेंस तो दोनों में सेम है ना। ओके ओके फाइन, देखो अगर आप रेजिस्टर का, देखो अगर आप वी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर लोगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आपने देखो रेजिस्टर तो दोनों की सेम है, एक्स और वाई दोनों में आप 3 रखोगे, राइट। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज, चलो अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो ले लो, अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज, हाँ मेरे ख्याल से शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक मिनट, हाँ नहीं पड़ेगा उससे कोई फर्क, क्योंकि हमारे पास जो है करंट पहले से ही दोनों सीरीज सर्किट है, तो करंट ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए करंट को कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि करंट जो है ना वो मुझे स्ट्रेट अवे चेंज होता हुआ दिख रहा था, सही है। तो इसलिए खैर, पहले वैल्यू बताओ, वैल्यू कौन सा वैल्यू निकाली, जी 0.548, 0.548 एंड 0.27. 0.27, ओके। सर ये आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? ब्रो वी इक्वल्स पावर इज इक्वल्स टू वी आई यार। अच्छा चलो मैं प्रूव कर, देखो मैंने ये लगाया पावर इज इक्वल्स टू वी या आई टाइम्स वी, ओके। वोल्टेज हमने पहले निकाल लिया था 1.28 का, सही।
वोल्टेज आप जो है वो 2 नहीं रख 1.5 नहीं रख सकते हो, क्योंकि हम जो है वो सिर्फ एक्स और वाई पे काम कर रहे हैं, समझ लो ना। और एक्स पे 1.5 पूरा नहीं ड्रॉप होगा, बल्कि कुछ ना कुछ 2 पे ड्रॉप, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगा, समझ रहे मुमीन? जी यस। सर। सही है, तो जो हमने वोल्टेज निकाला था एक्स पे और वाई पे, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, राइट। और एक्स और वाई के वोल्टेज हमने ये निकाले 1.8, 1.28 और ये 0.9, ओके। सही है। वी स्क्वायर ओवर आर से भी सेम ही आंसर आ रहे हैं दोनों। हाँ सही है, परफेक्ट है, क्योंकि वो करंट वाली चीज़ जो है ना वो नलीफाई हो जाती है, सही है, करंट वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, तो वो कोई टेंशन नहीं है, सही है। समझ गए हो भाई, समझ गए हो? कोई मसला किसी को? यस। सर वी स्क्वायर ओवर आर में हम 1.5 वोल्ट लेंगे ना, वी की वैल्यू। नहीं बच्चे, v की वैल्यू 1.5 नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो r आप क्या रख रहे हो, चलो अगर आप v रख रहे हो 1.5, देन r क्या रखोगे? यस। आर अगर वो जो टोटल है वो नहीं रखेंगे। अगर r टोटल रखोगे और v भी, मतलब अगर जैसे कि अगर आप पहला वाला सर्किट लो, तो अगर v जो है 1.5 है, तो r हमारे पास आ रहा है 3.5, राइट, ये बोल लो। जी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगा, उसने कहा कि पावर डेसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर, तो वो तो पता ही नहीं चलेगा फिर, समझ रहे हो आप? फिर वो खाली 3 ओम रेजिस्टर के। तो अगर तुम 3 ओम रेजिस्टर का अगर आप रेजिस्टेंस रखोगे, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि 1.5 सारा का सारा तो 3 ओम पे नहीं जा रहा है, उसमें से कुछ तो वहां पे भी जा रहा है, 5.5 पे भी जा रहा है, राइट। क्लियर हो रहा है? जी सर। सही है, तो उसके लिए हम पहले ही जो है ना वो वोल्टेज निकाल चुके हैं पोटेंशियल डिवाइडर वाले फॉर्मूले से, या जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सही है, तो हमारे पास 1.28 आया था, ओके क्लियर। अच्छा जी, आ जाओ आगे ओके चलते हैं। सर। वैसे ये इसका तो आंसर बी है ना सर? इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रेटर इन एक्स। हाँ जी, ग्रेटर बी हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा बेकार सा क्वेश्चन लग रहा है। हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू, तुम्हारे पास करंट दिया हुआ है रो आर, ओके। जरा रीड कर लो कोई बंदा, कौन बंदा रीड करेगा? इब्राहिम रीड कर लो जरा प्लीज। The diagram shows a junction in a circuit where three wires P, Q, and R meet. The current in P and Q are 1 ampere and 3 ampere respectively in the direction shown. How many coulombs of the charge pass a given point in Y R in 5 seconds? जनाब, अच्छा जी, क्या करेंगे भाई? कोई आइडिया, कोई तिगड़म? How many coulombs? देखो, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए होगा कि करंट कितना गुजर रहा है आर से, सही है, सबसे पहले तो आपको ये चाहिए होगा, राइट। ओके। अच्छा जनाब, अब आप ये देख रहे हो कि भाई आपके पास ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे आपके पास पी जो है वो एंटर हो रहा है, राइट। और क्यू जो है वो लीव कर रहा है, राइट। यानी 3 एम्पियर का करंट लीव कर रहा है जब 1 एम्पियर का करंट एंटर हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है कि देर शुड बी 2 एम्पियर मोर जो कि एंटर होना चाहिए, ओके। क्या ये बात समझ में आ रही? यस इब्राहिम, इब्राहिम कुछ तो बोल यार। सर ये रिपीट कर Sir, देंगे नहीं एक बार? नहीं ओके समझ आई। ओके, सुन लो, दोबारा से सुन लो। मैंने ये बोला कि देखो, अगर तुम सिर्फ सोचो, हमारे पास किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि भाई हमारे पास जो भी करंट एंटर हो रहा है जंक्शन के अंदर, उतना ही करंट लीव होना चाहिए, ओके। यही कहते हैं। सो अब आपके पास जो है, यहाँ पे जो करंट एंटर हो रहा है वो तुम्हारे पास सिर्फ 1 एम्पेयर एंटर हो रहा है, राइट। लेकिन तुम्हारे पास जो लीव हो रहा है वो 3 एम्पेयर लीव हो रहा है, राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि 3 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर तो यहाँ से आया होगा, राइट। लेकिन बकाया जो 2 एम्पेयर है वो भी तो कहीं से आएंगे ना। तो उसके लिए मैं यहाँ से 2 एम्पेयर अगर मैं भेज दूँ, राइट, टुवर्ड द जंक्शन, तो वो सारे मिल के 3 एम्पेयर बना के यहाँ चले जाएंगे, ओके। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो जी रही जी है? सर सर। अब। परफेक्ट। सही हो गया, तो हमें अब ये पता चल गया कि भाई हमारे पास जो आर का जो पाथ है उसके अंदर से 2 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, ये हमें पता चल गया, राइट। अच्छा, तुम्हें पता है क्यू इक्वल्स टू आई टी का फॉर्मूला तुमने लगाया, करंट तुम्हारे पास आ रहा है 2 एम्पेयर का, चार्जेस तुम्हारे टाइम तुम्हारे पास आ रहा है 5 का, तो 2 टाइम्स 5 10 हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, ओके। क्या ये बात क्लियर हुई? जी सर। परफेक्ट। सर इसमें टोटल करंट नहीं लेंगे?
देखो उसने सिर्फ आर का बोला हुआ है ना, उसने कहा हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पासिस अ गिवन पॉइंट इन द वायर आर सिर्फ, तो हम टोटल अगर अगर वो बोलता है ओके। जंक्शन पे देन हम वो ले लेते, राइट? जी सर, ठीक। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। क्या नाम है और कौन है भाई? मनाइल जरा क्वेश्चन रीड कर लोगे प्लीज? Kirchhoff's two laws for electric circuits can be derived using the conservation laws. On which of the conservation laws do Kirchhoff's law depend? हम्म। ब्रो कोई आइडिया? अच्छा सर फर्स्ट लॉ मेरे ख्याल से एनर्जी थी। है, देखो पहला लॉ हमारे पास होता था उसका करंट का, सही है। अच्छा पहले लॉ को याद रखो, सही। फर्स्ट लॉ करंट का था, राइट। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ था वो वोल्टेज का था, ओके। सो करंट जो है वो चार्ज से रिलेटेड है, ओके। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि भाई अगर चार्ज एक क्लोज लूप अगर हम मान लो, तो क्लोज लूप के अंदर चार्जेस सेम रहेंगे, इस पे हम ईमान ले आए थे, सही है। तो जब हमने कहा था कि भाई चार्जेस सेम रहेंगे, सो उसकी वजह से करंट भी फिर सेम होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमारे पास करंट हमने ड्राइव किया, राइट। सेकंड लॉ जो है वो वोल्टेज लॉ होता है, राइट। और वोल्टेज बेसिकली रिलेटेड होता है एनर्जी से। तुम्हें पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। सो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई जो भी इनपुट एनर्जी होनी चाहिए वही आउटपुट एनर्जी होनी चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास जो है ना, फर्स्ट लॉ जो होगा वो चार्जेस से रिलेटेड होगा, सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी से रिलेटेड होगा, ओके। क्लियर हो गया? नाइल क्लियर हो गया? अच्छा जी। Yes. आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। हम्म, क्या नाम है, क्या नाम है इसका? शहीर ब्रो क्वेश्चन रीड करोगे प्लीज? The diagram shows a parallel combination of three resistors. The total resistance of the combination is 3 ohm. What is the resistance of resistor X? हम्म। भाई क्या करेंगे, कोई आइडिया? कुछ तो बोलो यार। यार सर इसमें तुम तो देख के आ रहे हो लेक्चर्स, बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हम वो वाला वन बाय आर का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारे सही हो पास गया। टोटल रेजिस्टेंस बता। सो अच्छा, आप ऐसा कहना चाह रहे जी सर। हो, ओके। सही है। सो वन ओवर आर टोटल हमें पता है 3 है, वन ओवर आर, हम ये आर एक्स हो गया, सही है, आर एक्स प्लस 1/12 प्लस 1/6, सही है। सो 1/6 है, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2/12, राइट। सो 1/3 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/12 प्लस 2/12, राइट। तो ये हो जाएगा 3/12, सिंप्लीफाई अगर करोगे। सो ये हो जाएगा 3/12, राइट। 3/12, राइट। 3 1 3, 3 4, राइट। सो 1/4, 1/4, राइट, उसको उधर ले जाओ। So ये 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/x, ओके। सिंप्लीफाई कर लो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 4 12 इज इक्वल टू 1/x। सही हो गया। सो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, सो बेसिकली 1/12 इज बेसिकली वन 12। ओवर एक्स सही है, सो 12 आ जाएगा। परफेक्ट, चलो उत्तरी आ जाओ भाई। क्या नाम है, क्या क्वेश्चन क्या है, ओके। ईशा जरा रीड कर लोगे प्लीज? In the circuit shown, the ammeters have negligible resistance and the voltmeters have infinite resistance. अच्छा एक बात बताओ, वोल्ट मीटर की इन्फिनिट रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए? कोई आइडिया? नहीं। अब यार कुछ तो नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। ताकि करंट ना पास हो। तो क्या होगा अगर करंट पास हुआ तो? उसने वोल्ट्स मेजर करने होते हैं ना। ओके। नहीं, थोड़ा और अच्छा करो, थोड़ा और अच्छा करो। अच्छा, और अगर अगर चलो अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो क्या सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का? व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस। एक सर छोटी वोल्ट सी। मीटर तो वो कंपोनेंट से कनेक्ट होता है ना पैरेलल। तो क्या हुआ?
तो उससे उससे पता क्या चलेगा, आप उससे क्या बताना चाह रहे हो कि जो है ना अगर पैरेलल कनेक्ट है तो उससे मतलब हमें मतलब क्या होगा? तो फर्क तो नहीं पड़ेगा इस सर्किट पे। है नहीं मतलब नहीं मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर लेट्स से ये 6 ओम है और इसकी इनफिनिट रेजिस्टेंस दी हुई है, तो क्या इससे कोई मतलब ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप क्या कहते हो? पता नहीं सर। चलो एक एक करते हैं, छोटा सा मैं एक चीज कराता हूँ, ये बेसिकली ना आगे तंग करेगा ये। सही, अगर लेट्स से आपके पास जो है ना यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आएगी इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन है? यस, बता 5। सकते? 5 हो जाएगी, ओके। अगर मैं इसको 10 रहने दूँ, इसको मैं 100 कर दूँ, अब क्या होगा? 1/10 प्लस 1/100, राइट? तुम्हारे पास जो है ना वो 11/100 हो जाएगा ऐसे ही। सो 100/11 करो, कितना आता है? 9.09। 9.9, 9.09, ओके। अच्छा, तुमने तुमने नोटिस किया कि अगर मैं बड़ी रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ तो उसका कोई काम ही नहीं हो रहा, राइट? जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रही है वो एक्चुअली इतनी आ रही है, राइट? तो अगर मेरी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी तो एक्चुअली उससे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? वो बेसिकली 6 ओम की रेजिस्टेंस ही आपको दे देगा। और यस, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो उसके अंदर से करने लगेगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि भाई फिर यहाँ पे भी मतलब जब करंट फ्लो हो जाएगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब करंट हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, राइट, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। खैर, ओके, आगे आ जाओ। यस ईशा, जरा रीड कर लो प्लीज, क्वेश्चन भूल गए होगे हम सब। In the circuit shown, the ammeters have negligible resistance and the voltmeters have infinite resistance. क्वेश्चन कुछ कह रहा है? The readings on the meters are I1, I2, V1 and V2 as labeled on the diagram, which is correct. ओके, अच्छा जी। एक मिनट, थोड़ा सा जो है अगर हम इसको वो कर लें। हम्म अच्छा, I1 शुड बी ग्रेटर ना, क्योंकि रेजिस्टेंस छोटी है, बट I2 शुड आल्सो बी हाई। अच्छा, लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ से 5 एम्पियर का करंट जा या 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, लेट्स से, सही है। सो यहाँ पे 4 एम्पियर जाएगा और यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा, राइट? 6 एम्पियर का करंट इस तरह से डिवाइड होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऊपर ज़्यादा करंट जाना चाहिए, नीचे कम करंट जाना चाहिए, राइट? और फिर वही 6 एम्पियर यहाँ से पास होगा, और वो 6 एम्पियर 3 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, राइट? और 2 एम्पियर यहाँ पे जाएगा और 3 एम्पियर नीचे जाएगा, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, ओके? इसे समझ रही हो ईशा? ऊपर से क्या? सर ये 4 और 2 आप जी। ओके, क्या बोल रहे हैं भाई? मैं पूछ रहा हूँ, ये जो 4 और 2 आपने वो डिवाइड किए वो हम्म खुद से किए या फिर कैलकुलेशन की? कैलकुलेशन से भाई। देखो ना, आपको ये सोचना है कि भाई ऊपर ऊपर जो है वो अ, जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली हाफ है और नीचे डबल है, राइट? यानी अगर आप टोटल यूनिट देखो रेजिस्टेंस के, तो बेसिकली 3 इन टोटल जो है ना वो, ये तो आप 9 ओम की रेजिस्टेंस कह दो, राइट? 9 ओम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप 6 एम्पियर का करंट ले रहे हो, तो आपके पास अगर 3 ओम की रेजिस्टर होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करंट होगा, राइट? तो आप जो है 2 आ रहे हैं। हम्म और वो 2 जो है आपके पास जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, नहीं नीचे जाना चाहिए, सही है, वो 2 नीचे जा रहा है, सही हो गया। और 4 जो है वो ऊपर चले जाएगा, समझ लो? यस, कुछ तो बोलो यार। सर इधर 3 पे 2 आ रहा है लेकिन वो अपने सर्किट पे तो। आएगा आएगा आएगा, पहले ये बताओ, ये 3 पे 2 आ रहा है, राइट? ये थोड़ा सा ना उल्टा काम करता है, सही, इसलिए मैंने ये बताया नहीं, सही है। बेसिकली उल्टा काम ये देखो, तुम सेंस जो अगर तुम सेंसिबली सोचो, तो जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो कर सकता, ओके? वहाँ पे कम करंट फ्लो करने वाला है, ओके? और जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम नहीं फ्लो करेगा, ओके? सो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास अगर 3 पे तुम्हारे पास 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, राइट? तो बेसिकली
वो 6 का करंट तुमने निकाला, राइट। ये थोड़ा सा उल्टे तुम्हें फॉर्मूला देता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है, राइट। तो इस वजह से ये उल्टा आ रहा है, राइट, क्योंकि रेसिप्रोकल का इफेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, समझ लो। यस। अगर तो नहीं समझ में आता, देन अगेन आप इसको जस्ट मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने 4 और 2 लिया है सिर्फ ऐसे ही वो करने के लिए, सही है। अगर तो आप इसको वो करो, ओके, सो अगर तो आप इसको सोचो तो भाई आपके पास जो है ना, हमने मतलब हमारे पास 3 के अंदर कंपैरेटिवली 3 ओम है, लेकिन हम उस पर जो है ना उस हिसाब से ये कर ही नहीं पाएंगे फिर। चलो, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें ये तो वैल्यूज से आप कर लो, राइट। एक ऑप्शन ये है कि भाई आप वैल्यूज एज्यूम कर लो, आप और जो है ना आप इसको सॉल्व कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप जो है जस्ट नॉर्मली इसको आप कह लो कि नॉर्मली इस तरह से जो है ना रेशो के मेथड से कर लो, राइट। जब भी पैरेलल होता है तो पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है, राइट, जिस तरह से सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है, राइट। पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होगा, और जो आप जो करंट डिवीजन निकालोगे, सही है, वो बेसिकली ऑपोजिट निकलती है, राइट। आप अगर आपके पास जो है ना 6 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 आ रहा है, तो बेसिकली वो ऑपोजिट होगा, राइट। ये तो आप इसको फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप इसको ऐसे सोच लो कि यू हैव इन टोटल ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, राइट, और उसके अक्रॉस आपके पास 6। अब यार लेकिन कंफ्यूजिंग होगा यार, मैं क्या करूँ इसका। चलो और आसान कर लो, और आसान कर लो, सही है। जो भी करंट होगा वो इस वाले पाथ के अंदर तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, राइट। इन दोनों पाथ के अंदर तो एग्जैक्टली हाफ होगा, राइट। लेकिन जो भी करंट होगा वो यहाँ पे इस वाले पाथ के अंदर वो बहुत कम होगा, और उस वाले पाथ के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो इस केस से हम ये कह सकते हैं कि I1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन I2। ओके, सही हो गया। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज़ हमारे पास है वोल्टेज ना। वोल्टेज के लिए आप देख लो कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सही है। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सही है। कि आपके पास जो है ना 1/3 प्लस 1/6, सही है, ये हो जाएगा 2/6, राइट, एंड 3/6 और 2 बन जाएगा, राइट। यहाँ से जो वोल्टेज यहाँ से जो रेजिस्टेंस आ रही होगी वो 2 की आ रही होगी, और यहाँ से आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2 2/2 1, सो यहाँ से 1 की आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रही है वो 1 की आ रही है, यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रही है वो 2 की आ रही है, ओके। सो अब अगर आप वोल्टेज देखोगे, सो वोल्टेज जहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आएगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे वोल्टेज कम आएगा, राइट। सो V1 पे वोल्टेज ज़्यादा आना चाहिए, V2 पे वोल्टेज कम आना चाहिए, राइट। समझ पा रहे हो, ये समझ रहे हो, मूवी समझ रहा जी सर। है यार। The diagram shows a circuit with 4 voltmeter readings, V, V1, V2, and V3. Which equation relating the voltmeter readings must be true? Hmm. So, so if you use a concept, oh shit, if you use a concept of um the the voltage in the series and in the parallel, you'll have the idea, okay. So R2 and R3 are both connected in parallel, okay, and you know that the voltage in parallel remains the same, okay. So V2 should be the same as V3, right? And you have the battery, so your V should have the greatest value, and your V should be equal to the V1 and plus the V2, right? And V2 is basically equal to V3, right? So you can say that like that. Okay. Now let's see. So V, uh-huh, and they actually give you the values of the resistance, so we can also relate it further, right? So so they're giving one, if you just solve, so it will have the total resistance of 1 over R plus 1 over 2 R. That will be 2 over 2 R, 3 over
Um, 2 over 2R, 3 over 2R, and 2R over 3. 2 Is r is over 3. D the answer? You are saying D the answer, let me see. Yes. And why? Because you just ran into the question. V2 is equal to V3, right? So Yes. V V3 is equal to V minus V1. That's basically it. V minus V. Yes, fine, fine, fine. Perfect. We can also do something with the resistance, but they are not actually doing that. Okay, fine. Chalo. Ajo. Acha, Irfan, you have to read this question. You have to solve this question. Yes. Three resistors are connected in series with the battery as shown in the diagram. The battery has a negligible internal resistance. One second. Yes. Yeah, okay. What is the potential difference across a 180 ohm resistor? Hmm. So, can you first tell me whether it is a series circuit or a parallel circuit? Yes, Series. series, because it hasn't any other junction. Okay, fine. And then Uh, straight. One second. you can do two things. This is with the EMF that with the internal resistance, right? But there's no internal resistance. So, Yes, without internal resistance. So, like you can use the ratio method. You can say that the total EMF should be across the total resistances that you have, which is 120 plus 150, okay, plus 180. Okay, so how many voltage will be there? Will be across the 180 ohm resistance. Okay, you can just do the cross multiplication. Okay, so 6 times 180 divided by 120 plus 150 plus 180. Okay, now please do the calculation. Are you done? Mm. Yes, what happened? कहाँ रह गए हो? If you do, that would be up B, 300. B, sorry. B? My mic was wrong. Yeah, 2.4. Okay, fine. Let's move on. Imad, please read the question. A potential difference of 12 volt is connected between P and Q. What is the potential difference between X and Y? X and Y. Hmm. Aja, Imad, what do you mean by the potential difference of 12 volt across P and Q? Can you explain? Like, what do you understand by this sentence? Um, I don't know. What? Like, you should have some So understanding. both ways, 12 volt is entering. No, 12 volts can't be entered. It just I mean, drop like, across. So, so basically, like 12 volt should be across these two resistors and 12 volt should be across these two resistors. This is what they mean, okay? Because if you have the 12 volt dropping across these 2 points, so these 2 points have either this path or that path, right? And since you know that in parallel, because this combination is in is parallel combination, right? We have junction at P and Q, okay? So that's why the upper loop will have the same voltage drop and the lower loop will have the same voltage drop, okay? Getting? Yes, Ahmad. yes, Okay, fine. Now, what you do to find out the potential difference across X and Y? so find total current. Mm, Find the total current and then
sir, and then I equals V over R. I mean, V equals IR. Come on, you can do that, or you won't be able to use that because it won't work. So what you do over here, okay, so first if you It's are just that, uh-huh, sorry, it's just that R1 into R2 divided by R1 plus R2 or something. I'm not sure. R1 into R2 divided by no, you also don't require that. They're not asking for the parallel combination for the total circuit resistance, right? They're just asking the potential difference between these two resistances, right? So what you do over here is you first have to find out the potential difference or the potential drop at X and the potential drop at Y, and you have to subtract them both. Okay, is that clear? Is the concept clear? Now, Then would it be A? how? Uh, if it's Mm-hmm. the entire thing is 12, then in between it'll be like 6. Actually, I'm not sure. Actually, no, because the resistances are not equal, right? Oh, okay, fine. These are the equal resistance. So if you are using this resistance to make your statement, so that would be incorrect because the two resistance or all resistance should be equal in order to have the zero potential difference. Okay. Now let's try. So to find out the voltage drop across X, we can use the ratio method. We can say that the total resistance of this loop is 1500. Okay, and the voltage drop across this 1500 resistance is 12 volt. Okay, so what will be the voltage at 500? What will be the voltage drop at 500 ohm resistance? Okay, so that would be 500 into 12 divided by 1500. Okay, 5 ones are 5 threes are 3 ones are 3 threes are 3 fours are 12. Okay, so this means the voltage drop across this point is 3 volts. Okay, so you'll be left with Sir, it's uh 4. sorry 4 3 ohms. 4, yes, sorry, 4, sorry, sir. 4, sorry. Okay, so the voltage drop across this point is across this resistor is 4 volt, and out of 12 basically 4 volt get dropped across this one, so you'll be left with 8 volt remaining at this point. Okay, is that clear, guys? Is that clear? Any problem, Imad, Irfan? No, sir. Okay. No. Now you have to do the similar working for the second loop. Okay, so we have the total resistance of 3000 and we have the voltage drop across it as 12 volt, and we have 2000 of resistance, and for that the voltage would be X. Okay, so 3000, okay, so 12 times 2000, okay, divided by 3000, right? So 3 ones are 3 and So you get 3 8. you'll get 8. Okay, so this mean 8 volt drop across this resistor. Okay, so the remaining would be at this point. Okay, so there will be That's 4, 4 right? volts. Yes. Yeah. Okay, now we have 8 volt at X and we have 4 at Y. Okay, so you subtract the two, you'll get the potential difference at these 2 points, so that will be 4 volts. Okay, is that clear, guys? Yeah. Okay, they are saying this should not be 0. This should not be 0. Okay, fine. Let's move on. Okay, Gulmira, please read the question. The diagram shows a low voltage circuit for heating water in a fish tank. The heater has a resistance of 3 ohms. The voltage source has an EMF of 12 volts and an internal resistance of 1 ohm. At what rate does the voltage source supply energy to the heater? Okay, क्या करेंगे? कुछ आइडिया गुलमीना ऐसे ही सुन बैठी हुई हो? क्या वजह? Yes.
सर यहाँ internal resistance का कहा है तो इधर formula लगाएंगे. अच्छा जी. So you are saying internal resistance को तो नहीं, internal resistance खैर 1 ohm उसने दे रखी है. So fine. There's a formula that's EMF is equals to I smaller and I plus I capital R. Capital R. Is Okay. that Yes, is yes, that yes. the one you have to use? You have to, yes. Okay. So basically, they're saying at what rate does the voltage source supply the energy? So at what rate they're basically asking you the power. Okay, you can also check the unit. Okay, so the power energy or supply it to the heater. Okay, so we basically have to find out the voltage drop across the heater. Okay, and let's try. So so if I just draw this into the circuit, so we have a battery and we have an internal resistance and we have a heater. Okay, this is the circuit. Okay, with 3 volt right here, with 1 volt with 1 ohm right here, and a battery of 12 volts. Okay, now so uh, now we are actually interested in this heater. Okay, so if we try to find out the voltage drop across this heater, so that would be the total voltage. The total voltage is 12, and that is dropping across a 4 ohm resistor. So if we have the 3 ohm resistor, so how much voltage will be dropped? And just do the cross multiplication: 3 into 12 divided by 4, and that will give you x. 4 threes are 12, sorry, 4 ones are 4, 4 3 are 12, and 3 threes are 9, so x is equals to 9. So basically over here there will be 9 volt drop. Okay, now so if you have 9 volt, so and you know the resistance, you can use the formula power is equals to v square over r. Okay, and v square is basically 9 volts. Okay, over r is going to be 3. Okay, so if you just solve, so that would be 9 square is 81 divided by 3. 3 ones are 3, 327 times up. Okay, Yeah. yes. Yeah. Okay, so fine, let's move on to this one, please. किसकी बारी है? Ahmad, your turn, or Irfan, your turn? Okay, Irfan, you read the question. Yeah. Okay. The diagram shows an arrangement of resistors. What is the total resistance between X and Y? Okay, total resistance between X and Y. Okay, so you can see that these three resistors are in series, right? Because there isn't any junction in between them, and 10 is in parallel with all of them, right? So the simplification of this circuit would be, or you can also see this circuit as this is point X and this is point Y. Okay, and over here we have 10 ohm, and we have three resistor like this. Okay, okay, and all of them are 10 ohms, right? So when you add them all, you'll get a 30 ohm big resistor, right? A 30 ohm big resistor. Okay, now you have to solve it parallel, so 1 over 10 plus 1 over 30, right? And that would be 3 times. You just need to times them to get the strategy. So that would be 3 over 30 plus 1 over 30, 4 over 30, and 30 over 4. 4 ones are 4. Sevens are 28.225, 7.5. Okay, fine. What is the total electrical resistance between point less than 1 ohm? No, we are getting 7.5. Okay, between 1 ohm and 10 ohm, yes. Between 10 ohm and 30, no. At 40, no. Okay, is that clear, Bachu? Is that clear, guys? Yeah. You can just do what Hmm. is this?
There's a 1 by 10 plus 1 by 30, and then you'll get like 2 by 15, and you just reciprocate that, right? Yes, Because it's yes, 1 yes. by. Yeah, yeah, yeah. Okay, perfect. Now let's move on to Imad. Oh, tired question again. Imad, your turn. The diagram represents a circuit. Some currents have been shown in the diagram. What are the currents I2, I1, and I2? Bismillah. अच्छा जी. So what is this? अच्छा जी. तो भाई, Oh, so they're basically saying, okay, let's try to analyze it first. They're saying we have 20.2 ampere current going this direction and 10 milliamp and 10.6 milliamp going this direction, right? You remember the Kirchhoff law, the current law, Imad? yes, sir. Current entering the junction should be equal to the current leaving the Perfect, junction. perfect. Okay, so this is the junction J. Okay, current entering is I2 and current leaving are 20.2 and 10.6. Okay, so can you tell me the value of the I2? Sir, you add them, right? Perfect. So I add them and 10.6 milliamps. So that way 30.8. 30.8 milliamps. Okay, that's perfect. Don't you have to add this 10.8 also? Actually, no. Actually, I'm not talking about this like one through the. Actually, no, wait. Yeah, that is the correct answer. Never mind. Okay. Okay, I Now, got it. okay, perfect. Now, this is the first portion. Now the second is, if you consider this junction, actually, fun, this is the other junction, no? So you can't add 10.8 because this 10.8 is not directly connected with the first junction, right? That's why. Okay. But the current leaving this junction will be the same as I2, right? Current leaving which junction? Right. This one? No, the one opposite to that, the next point. This junction, junction two? No, the like after 10.8, there's one point where Okay, wait, uh, wait, wait. Junction one, junction two, junction three we have, and we have junction four. Which point are yeah, we talking? junction 4. Will Yes. it be equal? Yes. So basically, at like I2 at this point should also be here. Okay, clear? Yeah. Since, since we don't know these resistance value, so we actually cannot say that these two current should also be 10.6 and 20.2. Okay, is that clear? If I say this has 10 ohm resistance and this also has a 10 ohm resistance and this also has the 10 ohm, this should be greater, it's smaller. Let's say this has a 5 ohm resistance, this has a 5 ohm resistor, and this has a 10 ohm resistor, right? So if the circuit is like that, then you can say that across both 5 ohm resistor there will be 20.2 amperes of current. So there will also be 20.2 current in this loop, in this circuit, or in this resistor. But since they didn't mention the resistances, so we cannot say that the current flowing through this resistance will also be 20.2, but the summation of both the current entering this point, junction 4, should be equal to 30.8. Okay, is that clear? Yeah. So if this Mm-hmm. the junction 1 and junction 2, if it's 10 ohm resistor, it should be 10.8, right? Because same current, same resistance. Same resistance means same current, right? Over Yeah. here you can see that 10.8 and we have 10.6. So this means this would have slightly lower resistance and it would have slightly higher resistance, right? Because more current can go through least resistive path, right? Clear? Yeah, okay. Good. Perfect. Now let's move on to okay. Okay, so this is junction 2 and let's try the junction 3. So junction 3 would be
So junction 3, There will I1 be 0.2? I1, where is I1? I1 is, you are saying 0.2. Let's analyze. And how? Sir, I2 on this left hand side and right hand side is equal. So 10.8 is in the bottom. So 30.8 minus 10.8 will give you the top wire current. Uh, I don't know, maybe. एक minute. So if you're considering junction 3, so junction 3 will have 20.2 milliamps of the current entering it, okay, and should be equal to I1, which is leaving, plus there should be some current, okay, let's say I3, okay, plus I3, okay. We don't know both of them, right? And if you talk about the junction 2, okay, so the junction 2 will have 10.6 milliamps of the current entering it plus I1, okay, and should be equal to 10.8 the current leaving it, okay. So if you subtract it, you'll get, yes, 0.2 as your I1, okay. Is that clear? Yes. Fine. So I1 should be 0.2. Sir, I आप last part please explain कर सकते हैं again. कौन सी जंक्शन का जंक्शन नंबर बताओ. Junction number 2 का. Junction, okay. So junction number 2 is right here, okay. This current of 10.6 is basically entering the junction 2 along with I1, which is also entering the junction 2, okay. And this 10.8 is the only current that is leaving this junction, okay. So I add all the current that are entering, which is 10.6 and I1, okay, and we have to equate it with the current leaving it, which is only 10.8, right? So and I just move 10.6 to the other side, so it would be 10.8 minus 10.6, so you'll get 10.2, okay, clear? जी sir. Perfect. So that is I1 is zero point 0.2 and I2 is 30.8. Okay, fine. Okay, perfect. Okay, let's try this question, Gulmina. Which circuit has a resistance of 40 ohms between the terminals? Okay, we have we have four circuits. Okay, so if we try to solve the first resistor, okay, try to solve the second one. The first one is not easy. So if we consider a second resistor, second circuit, so this would be 200. Okay, this would be a 200 ohm, right? And 1 over 100 plus 1 over 100 plus 1 over 200, right? And that would be 2 over 100 plus 1 over 200. And when you do the LCM thing, you'll get 4 over 4 over 200 plus 1 over 100, 1 over 200. So when you add them up, you'll get 5 over 200, 200 over 5, and 5 ones are 5 fours are 20, 40. I am getting 40. Okay. Now let's try the other circuit as well. So if you consider the C1, so 20 plus 20 plus 20 60. So 1 over 60 plus 1 over 20, right? And that would be if you do 3 times 3, so it'll be 3 over 60, 4 over 60, 60 over 4, 4 ones are, and 2 twos are, and 2 threes are, or 30s are, and then 15. Okay, Sir, 15. 15, perfect. And at 40 over 40, 1 over 40 plus 1 over 40, 2 over 40, 40 over 2, 20. Okay, 20. And if we try this one, This one is 20. the A, Yeah, it's 4 into 1 over 100 plus you'll get 1 over 25. Yeah, okay, wait. yeah, 25. Sorry. So 1 over 25 plus 1 over 100. That would be 50. Wait. So that would be 50, and that would also be 50. Okay. These two, the combination of these two resistances would be 50-50. Okay. And you have this resistor
over here, and 1 over 50 plus 1 over 50, 2 over 50, 50 over 2, 25, 25, okay, 125 basically. I'm getting 125. Are you getting the same? Yes. No, I'm getting 20 No, it can be 20. If you're doing, because this 1 over 50 plus 1 over 50, then uh-huh. plus 1 over 100 because No, bro. That is not in parallel. That is in series. After solving this in parallel, you'll get 1 over 50 oh, plus 1 then over you 50. added. Okay. Yes. Okay. So 1 over Okay. 50 plus 1 over 50 give you 25. Okay. And then when you add them, when you add 100, you'll get this one. Okay. Now, last two questions. So, um, Irfan, your turn. A Yes, bro. cell of Mhm. EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected to a network of resistors shown. V1 is the potential difference between S and P. V2 is the potential difference between S and Q. What is the value of V1 minus V2? V1 minus V2. Okay. S and S and Q. V1 is the potential difference between S and P. S and P. Okay, V2 is the potential difference between S and Q. S and Q. S and P. Okay. Yes. What you do? Do we have to convert this? We have to use ratio method, right? Yes, for the different loops. Like Yeah, we have. so this we have to convert it to ohms or should we leave it in? No, you don't need to convert it because the ohms or the kilo ohms will get cancelled out at the end. Okay. Uh, so for this one, for P, it's 2. I Yes. think, I don't know. Actually, no. The potential difference at P would be 1 and at S would be 0. Okay. Look, if you have 2 volts battery, so this means at this point, at this higher point, there will be 2 volts, right? And lower point at S, there will be 0 volt, obviously, right? And as the current flow through the equal resistances, so at the first resistance, half of the voltage get dropped, okay? And half of the voltage will get dropped across the second resistance, okay? Clear? So Yeah, So this is P and S. The potential difference between P and S is just 1, but they're saying V1 is the potential difference between S and P. Okay, so S and P meaning you have to do 0 minus 1. minus 1. Okay, so yes, so basically V1 should be -1. Okay, now if we consider the potential difference between S and Q, so S is still 0, we have to find out the potential difference across Q. Okay, so if you have 2 volt, this mean this 2 volt will be right here, okay? And you have to find out the potential drop across this point and the other point. So just do the ratio method. So 2 4 volts over is 3. across 5 kilo ohm resistance, right? So how much voltage will be drop across? Yes, how much will be voltage drop across 2 kilo ohms? Okay, Why so 5 kilo ohms? because in total we have 5. Oh, okay, fine. You're not allowed to consider this loop, okay? Because they both are in parallel, right? We have to consider it separately. Oh, no, I thought you had to just do the value of one resistance, not the total. Okay. Mm. So 4K divided by 5K is your X, okay? So X is 0.8. So this point, at this point, there will be 0.8 utilized. So out of 2 volts, you will be left with 1.2 at Q, okay? So basically, 0.8 is actually the volts that you utilize it, okay? So the remaining voltage would drop at this point Q, right? Now, if you consider between the S and Q, so the V2 would be negative 1.2, okay? Is that clear, guys? And now you are finding V1 minus V2,
and V1 is -1 and V2 is -1.2, right? So when you subtract, oh man, I'm getting positive Yeah, 0.2 B read point B. two. Yes, June 2015. Wait, fine. Question 33. 33. Yeah, the actual answer is C, not B. Just give me a second. Sir, are the resistors in parallel or series? Yes. What you're saying? Sir, if the like all the resistors, are they in parallel or series? No, these two are in series, okay? And this is one loop, and these two are in series, and this is one loop, right? You can consider, you can consider, um, basically you can consider two different circuit. One is like this, a 5 ohm, and another one like this, okay? And one would be, okay, so the first one is 5 and 5, the second one would be 2 and 3, right? Sir, but how do we know if P is a junction or not? If P When is a it's a P is dotted line. not a junction, right? A junction is something that have more than one path, okay? This P has just one path, okay? So if there's another path, then you can say that that would be junction, right? Okay. Okay. Now, fine. So actually the answer is 0 point V2 is a potential difference. Okay, minus minus plus. So the actual answer is C. We are getting B. And S to P is just -1, and S to Q is also -1.2, because that is 0 and that is 1.2. So, or okay, no, we don't need to do that. S and P are between. Okay, so we actually have to do that. Won't be just -1, that would be 1, and that will also be 1.2. And when you just come on, when you just saw, यार हट जाना भाई. So what the hell, man? So when you just solve, so you will get the hell. So when you just solve this resistance, so that will be negative, sorry, that will be just 1 minus 1.2, okay? And you will get 0.2, okay, with the negative sign. Clear? Right? That won't be negative 1.2, right? It should be just one. It should be just 1.2, right? Because they're saying um
because they're saying between S and P. So you have to find the potential difference starting from P, starting from Q, let's say in this case, and ending at S, right? So this way it will be correct. Okay, clear? So now I'm ending the class right here. And I'll send you guys this worksheet, and this has very like interesting questions. Okay, Sir, send and us PDF. okay, done. So try them out and let you know if you guys getting any problem. We'll do. Um, did we try question one in the class? Paper two in the class? No, sir. No, then tomorrow we'll do the paper two in the class. Okay, sorry. Okay, sorry guys. Take care. Allah Hafiz. Hafiz. Hafiz.